હું એક ખેડૂત છું. હું જો શીખું તો હું યંગ છોકરીને તૈયાર કરું અને એ પોતાના પરિવારને એ મદદરૂપ થાય. બેઠી મેં આમ ચાવી મારો, સેલ मारो, ब्रेक लगाओ. तो ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कभी कि एक सुई धागा मुझे इतना आगे ले जाएगा. ગામડેથી આવેલી હતી તે પણ હું આ સંસ્થામાં જોડાઈ ને પછી તો મને એટલી બધી હિંમત આવી ગઈ. 500 માણસ બેઠા હોય ને અમે જઈને ફટ્ટ લઈને બોલી જાઉં. પહેલા તો પ્રકાશભાઈની ઘરવાળી એમ કહેતા હતા પણ હવે તો हिताक्षीबेनना घरवाड़ा एम के छे. संगठन में मतलब क्या कहता बल है, शक्ति है. सबसे बड़ी बात है हमारे पास संगठन है. और मैंने मेरे खुद के पैसों से फ्लैट खरीदा. मेरे हस्बैंड के पैसे नहीं है उसमें. ऐसे मैडम मैम वाला हमारे यहाँ है ही नहीं. ऐसा नहीं फील होता है कि कोई कारीगर है या कोई सेठ है. How to remain small and yet be big. Strategy of joint action of union and cooperative. तो लड़त भी करो और रचनात्मक काम भी करो. And I see an answer in the federation. Unity is the base. Future what we do is that we want to change the market, maneuver the market, reform the market. 110 cooperatives, the union of more than 3 lakh women, a constructive struggle for the identity, rights and rightful place of women workers. Seva Cooperative Federation, the first of its kind, not only in India, but in the whole world. Its roots deep in the nation's history. (1917) Ahmedabad, the hub of textile mills. The nation was not free then, and labor rights, they were unheard of. Ansuya-ben Sarabhai. She was organizing workers in her brother Ambalal Sarabhai's own mill. So she joined hands with Gandhiji and together they founded the Majur Mahajan or the Textile Labor Association in 1917. And it was into the Textile Labor Association that our founder Ila-ben Bhatt found herself. Slowly I grew in my work and was taking cases of textile workers. And then 2 mills closed down in Shapur area. So they were fighting, and then they were all sitting all the time in the compound of our union. So I asked our leader in the union, how do they survive? Asking me, go and find out. And she went into the market and was appalled by what she saw. So much hard work, back-breaking work, and yet so much exploitation. The women said, we're not able to feed our children, much less send them to school or provide basic health care to them. It was then, Ila-ben says, that her eyes were opened to the world of work in India, which is largely in the informal economy. No labor laws were pertained to them, no minimum wage, no social security. Her whole perspective on organizing labor and workers' movements was changed forever. Then I struck that,
Why am I working for those who are already protected by protected labor legislations? So from that day almost, I decided not to work for those workers, but those who are really working and supporting the family. With an education in law, experience in Majur Mahajan Sangh, and a deep faith in the ideals of Gandhi, Elaben started organizing the women working in the unorganized sector. तो हम लोग पहला मोहल्ले में जाते थे, तो हम इनको बोल रहे थे कि आपको कोऑपरेटिव में जुड़ना है, तो थोड़ी बहनें नाराज़ हो जाते थे कि आप तो रोज़ थैले ले लेकिन आ जाते बोले कि और जहाँ हमको ये काम नहीं करना। तो फिर मुझे ऐसा हुआ कि मुझे भी ये रास्ते पे अब थोड़ा बहुत जाना ही पड़ेगा, क्योंकि घर के अंदर अपने को कुछ मिल नहीं रहा, अपने को कुछ आ नहीं रहा है, तो अब तो अपने को सेवा में जाना ही पड़ेगा। There were very small number of members at that time, 1100 members or something like that. So at that point of time, we all came together even emotionally. As you know, in 72, we organized a trade union with all its rights. And it was a tough struggle because the union registrar had never seen this kind of union. And Elaben said women do so much work, are actively engaged in the economy, and yet remain uncounted, undercounted, invisible. The biggest problem was their access to credit, and that's where the middleman exploited them. They had to pay 10% a day for whatever loan they took. So they continued to be in the cycle of poverty. So when they went to the banks took one look at Chandaben with baby crying on hip and showed her the door. They said, "We don't believe these women can save. You're not bankable. You'll take the loans and you'll disappear. You'll never pay back." So Chandaben, she was on the mic, I was on the mic, and she said that, "Ben, why don't we start our own bank?" And I said, "We are poor." And she said, "We are so many." અને મારે બેંક જોઈએ એટલે જોઈએ પૈસા જમા કરીશ અમે આટલી બધી બહેનો ભેગી થઈને અને બેંક બનાવીશું. And they all decided that they would pay 10 rupees each, form their own share capital of 40,000 rupees. There were 4,000 women. They went to the Reserve Bank of India officer. He took one look at these women and he was horrified. "None of you have been to school." And he said, "I can't give you a license." So like your brother, I tell you, Elaben, they will not pay. And they don't know how to sign. હું સહી કરીશ મેં સહી કरूंगी દલાલોને છૂટા કરીશું. And the man was so moved, apparently, he had tears in his eyes and he said, "You got your bank." जब तो छोटी सी की बैंक थी हमारी, तो जब हमारा 10 रुपये में खाता खुलता था, वो भी खाता हम खुलाना शुरू कर दिया. फिर ऐसे करते करते बहुत बहुत सेवा आज देखो कहाँ पे चली गई है. We did not have any blueprint, we did not know how to work with the bank, and we didn't have experts in banking. Over a period of time, of course, numbers of women increased. Their businesses were also increasing, their savings were also increasing. And at present, we have more than 650,000 women who are banking with us. In terms of, at present, whatever turnover is, that at least 500 crore rupees, which women have been rotating. In 1975, the women who used to make quilts out of little pieces of cloth, waste cloth called chindi. So those women, they came to Seva. We want you to increase our rate. So they made a Sangathan, a union, and we helped them to go to the Labour Commissioner. We called their employers. Through the negotiations, their rates went up. But what happened? The leaders, they were dismissed from work. So they said, "Can we start any work of our own?"
we made the coals, we sold them in the market, we found there's a good market. And so then we formed the Sabina Cooperative, and that is the beginning of the cooperative movement within सेवा. तो सेवा का मूलभूत जो एक तरीका है कि जब आप ही उनके मालिक और ये सब कुछ होते हैं तो आपकी आमदनी बढ़ती है. One after the other, Seva cooperatives took birth. Sabina, Abodana Handicraft Cooperative, Sangini Childcare, Lok Swasthya Health Cooperative, and Women's Milk Cooperatives. ઘરની ભેંસો દોતા, ચાર પૂરો કરતા અને પછી ખેતરનું કામ કરવા જઈએ. ખેતરનું કામ કરીને સોજે ઘેર આવીએ તો પાછું એનું એ કામ હોય. તો આપણા પાસે તો રૂપિયો રહેતો નહીં. ડેરી કરવા માટે સેવામાંથી બહેનો આવ્યા. આ બધી બહેનો ધટંગ કરવા આવ્યા છે એવું અમે બોલીને બે રહી ગયા. બહેનો તો ફેર આવ્યો. પછી ત્રીજી ફેર આવ્યા એટલે અમે મક્કમ થઈ ગયા કે ગમે તેમ થાય હવે આપણે મંડળી કરો આ બહેનો આપણું સાલ નહીં મિલતો. तो पेथापुर महिला दूध सहकारी समिति, क्योंकि तब भाइयों की भी कोऑपरेटिव बनती थी, तो इसीलिए हमने बोला कि हम तो महिला समिति ही बनाएंगे जहाँ पर बहनें ही सभासद होगी, बहनें प्रेसिडेंट होंगे और पगार ही लेने के लिए बहनें जाएगी. 6 મહિના થઈ ગયા એટલે 6% 6 મહિનાનો 100% અમારે નફો પડ્યો. ફેટ કાઢનારે બેન હતા કે એને પણ બહેનો ચડાવતી હતી અને પૈસા કે ભાઈઓ અત્યારે તો ખાતા ખોલાઈ ગયા બહેનોનો તો બહેનોના હાથમાં જ પૈસા મળે એટલે ભાઈઓને પૈસા માગવા વખત આવી બહેનો જોડે. By 1992, we had about 33 such cooperatives. And it was then that Ilaben and Lalita Krishnaswamy thought that it would be good to federate all these cooperatives. So let there be many cooperatives on the ground, and how they again come together. The question arose that when they want to share their concerns and issues, where should they go? Our role is to make enterprise sustainable, not handicapped. When they are ready to take the charge to manage their own operation, then just we are sitting behind them. પહેલાં તો અમે એટલા ગરીબ પરિસ્થિતિમાં હતા એટલે એક મજૂર તરીકે કામ કરવા જતા હતા. ત્યારે મનેરેગાનું ખબર નહીં હતું. ત્યારે એ ખબર કે આ કામે એક સરપંચ અપાવે તો આપણે કામ કરવાનું. તો આટલા મોટા મોટા પથ્થરો અમે ઉચકીને રસ્તા પર મૂક્યા. વર્ષ પછી મીરાબેન અહીંયા આવ્યા. મેં બતાવેલો મીરાબેન આ રસ્તો છે ને અમને પૈસા નથી મળ્યા. એટલે મીરાબેને કહ્યું કે તમે અરજી કરો. તો સરપંચ ધમકી આપે છે તમને મારી નાખું, તમને આમ કરીશું. અને મીરાબેને સપોર્ટ કર્યો. ત્યારે રામપુરા નજીક ગામમાં મનરેગાના પૈસા મળ્યા હતા. એટલે એક વિશ્વાસ થયો આ લોકો કરે છે તે આપણા માટે સારું છે. Role of the Seva Cooperative Federation after the initial organizing is to help them develop their own bylaws. The whole process of registering the cooperative by going to the Department of Cooperatives, helping women have their first General Assembly and elections where an active board is elected. मैं बहन हूँ और कितना इम्पोर्टेंट, कितना महत्वपूर्ण हिस्सा हूँ मेरे घर का, समाज का और मेरे देश के अर्थतंत्र का.
ये लीगल आइडेंटिटी है। कोऑपरेटिव इज ए लीगल आइडेंटिटी जिसके थ्रू वो बिजनेस करते हैं, तो वो हमारी स्ट्रेंथ है और उसी को लेके हम आगे जा रहे हैं और श्रमजीवी बहनों के जीवन में बदलाव लाते। ને અમે એક સ્થાનિક ગામડાના રહેવાસીઓ જે બી કંઈ માહિતી હોવી જોઈએ તો અમારા સુધી પહોંચતી નથી, કેમ કે સેવા સંસ્થા મારફતે એવી એવી જાણકારીઓ મળે છે અમને, એક જાગૃતિનું કામ થાય છે. મરઘા પાલનમાં એમ તો પહેલેથી અમે મરઘા પાલન કરીએ જ છીએ, પણ આ એક બિઝનેસના રીતે અમને શીખવામાં આવ્યું છે. 2-3 હજાર આવે તો એ બહુ છે એમ ઘરે બેઠા બેઠા मर्गा पालन में. ज़रूरी ये है कि जो पढ़ा लिखा है उसको अनुभव की ज़रूरत है, और जो अनुभवी है उसको पढ़ाई का जो ज्ञान है वो लेना ज़रूरी है. तो दोनों को साथ में काम करना है. पहला तो अमे कई ज नहीं था, जीरो था एम समझिए. तो सेवा फेडरेशन थकी मिनिट्स लखवानी तालीम मળી મને. પછી એજન્ડાઓ એના પ્રમાણે ઠરાવ લખાય. ટાર્ગેટ તો અમારું અહીંયા તાલુકા લેવલે નથી, જિલ્લા લેવલે નથી, પણ બહાર ઇન્ટરનેશનલ લેવલે અમે પહોંચીશું એવું અમારું ટાર્ગેટ છે. તો સ્ટાર્ટ કર્યો ને તો મને બહુ જ આનંદ થયો કે મેં ટ્રેક્ટર ચલાવ્યો એમ. કદાચ ભવિષ્યમાં પરિસ્થિતિ સુધરે તો પોતાના ઘરે સાધન હોય तो ड्राइवर का खर्च बचे. और बहन में खुद में तो कॉन्फिडेंस आ रहा है, पर उसके हस्बैंड गर्व से कह रहे हैं कि मेरी वाइफ ट्रैक्टर चला रही है, या समाज में कि ये तो सब कुछ कर लेगी. ये समाज परिवर्तन का काम है. तो समाज परिवर्तन के लिए ऐसे काफ़ी उद्दीपक या लीडर्स या एग्जाम्पल्स चाहिए हो. जो उनका कॉन्फिडेंस है, जो उनकी आंख है, तो वो देख के फिर ऐसा लगता था कि जो मैं कर रही हूँ वही दुनिया में सबसे बढ़िया काम है कि हम लोग 10 पढ़ी लिखी बहन एज ए मैनेजर 50 लोगों का काम देती है, रोजगारी देती है. वो अभी तो बहुत बड़ा सपना है हमारा, वो फेडरेशन के साथ मिलके हम ऐसा सोचते हैं कि हमारी एक शॉप हो, और वो जो नहीं ऑनलाइन अभी होता है तो ऐसा तृप्ति का भी हो, वेबसाइट हो, और बड़ा वो नाम हो जाए कि वो तृप्ति नाश्ता वो सिर्फ महिला ही बनाती है. जण जण स्वराज अनुभवे नहीं. जण जण मीन्स everyone. Every human being is not able to enjoy freedom. There is no freedom yet. Poverty, in poverty where is the freedom? કામ જતું રહ્યું તો મેં 4-5 દિવસ સુધી તો અમે ખાધું જ નહોતું, કેમ કે અમારી જોડે પૈસા એ નહોતા. મારા છોકરાઓ એના અમે ઠોસ ને પાણી પીને અમે દિવસો કાઢતા 5 દિવસ. સેવા હોમ કેર મંડળી છે ને એમાં બહેનોને કે કામ આપો સરોજબેન એરિયો કામ તમે તમને હું કરાવડાવું, જો તમે રેગ્યુલર ને વ્યવસ્થિત કામ કરતા હોય તો મેં મારા કામની બહુ જ જરૂર છે, તમે મને લઈ જાઓ. સેવા હોમ કેર મંડળીમાં સૌથી પહેલાં મને સાધનોની તાલીમ આપી કે વોશિંગ મશીન કેવી રીતે ચલાવવાનું, પછી આપણે શું કહેવાય હા માઇક્રોવેર ચલાવવાનું શીખવાડ્યું, પછી આ ઘર સાફ કરીએ એનું પેલું આવે ને વેક્યુમ ક્લીનર એ બધું શીખવાડી બેન. यहाँ जुड़ने की वजह से कई बहनों की जिंदगियां बनी है कि यहाँ पे उनको रोजगारी भी मिल रही है, उनको सम्मान भी मिल रहा है, और उनको अपना फ्यूचर भी दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे आगे बढ़ने के स्कोप है. સેવા બેંકમાં ખાતું ખોલાયા પછી મેં લોનો લીધી 2-3. મેં પહેલાં રિક્ષા લીધી, પહેલાં તો સૌથી પહેલાં મારો છોકરો 200-500 રૂપિયાનો ધંધો તો ચોઈ ગયો નહીં. પછી મકાન લીધું.
આગે જાકે એમ કે મારા જેવી બીજી 500 બહેનો લાવો ને હું ઊભી રહીને 500 બહેનોની વાતો કરું એવું મારું મને. सेवा फेडरेशन ही मुझे लगता है शायद सबसे पहली बार सर्विस सेक्टर में काम करते हैं. तो जब हम रजिस्टर्ड करने के लिए रजिस्ट्रार जाते थे, रजिस्ट्रार का पूरा एक ढांचा है कि जिसमें सर्विस सेक्टर ही नहीं था, जो सेवा फेडरेशन ने डाला कि सर्विस सेक्टर होता है. सेवा फेडरेशन में हम लोग जो भी ट्रेनिंग करते हैं, वी प्रोवाइड ऑल द ट्रेनिंग्स बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द कलेक्टिव्स एंड कोऑपरेटिव्स. अभी रिसेंटली हम लोगों ने हमारी जो सेवा भारत की कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड उनमें दे हैव अ इशू लाइक बोर्ड वर नॉट एक्टिव. मैं ना, मुझे झिझक लगती थी बहुत किसी से बात करने में, क्या बात करूं. कोई पूछता था उतना ही जवाब, उसके अलावा कोई जवाब नहीं. जब बोर्ड मीटिंग में आते थे तो जैसे मतलब कोई चीज़ पूछा जाता, बोले समझ में आया तो सुन तो लेते थे, लेकिन उतना समझ नहीं आ पाता था. पता नहीं चलता था क्या हमारे कंपनी में फ़ायदा हुआ, कितना लॉस हो गया. हम लोग को सिखाया गया कि पहले तो आपस में ही मेल जोल से रहो. बोर्ड कैसे बनता है और बोर्ड की क्या क्या जिम्मेदारी होती हैं, बोर्ड में रह के क्या क्या फैसले लिए जाते हैं. सो दे वर ऑल्सो ट्रेन कि बिना पढ़े साइन मत करो. सो फिर उन्होंने बोलना शुरू किया. हाँ, वो ट्रेनिंग में बोला था कि मिनट्स मेंटेन करते हैं, तो आप ये दिखा दो. सेवा कोऑपरेटिव फेडरेशन की जीत इसी में है कि जो हमारी सहकारी मंडली है वो स्वावलंबी हों, उनके जो मेंबर्स हैं वो स्वावलंबी हों. तो जब हमारी बोर्ड की बहनें आती हैं, वो सवाल पूछती हैं, वो बैलेंस शीट पढ़ती हैं, तब इसमें जो खुशी मिलती है वो और किसी चीज़ में नहीं मिलती. क्योंकि यही हमारा विजन है कि बहनें खुद मंडली चलाएं, बहनें खुद फेडरेशन चलाएं. સેવા કોઓપરેટિવ ફેડરેશનના દૃશ્યતાના વિષય છે એ સેશન. તમે ક્યાંય પણ જુઓ એટલે we have 6 sectors, right, for women's enterprises, which is very, very exciting. Our process is very different. The women become part of the process. So we all sit down together and we say, okay, what is the objective of this communication and what would we like to say? પણ પહેલાં તો એવું થતું હતું, મોબાઈલ વાપરતા નહીં આવડતું હતું. એટલે જ્યારે આવા સ્માર્ટ મોડ પકડીએ તો બહુ બીક લાગે, શું દબાઈ જાય, શું કરવું. તો એ તાલીમ તો આપણે મોબાઈલ એવી રીતે ટચ કરવાનું છે, ગ્રુપ એટલે વોટ્સઅપ એવી રીતે ચલાવવાનું છે, મેસેજ એવી રીતે લખવાનું છે. That learning curve for them is very exciting. Oh, ये सब भी हो सकता है. It's not just मतलब अच्छा फोटो खींचो और डालो, सिर्फ उतना नहीं, इससे ज़्यादा भी हो सकता है. But it is a very, very fulfilling process, especially because women in the informal sector don't have access to technology. जैसे जैसे वक्त बदलता गया, सेवा फेडरेशन की जो तालीम की पूरी यूनिट है वो इस तरह से बदलता गया और बहनों की क्षमता जो है वो हम लोग बढ़ाते गए. सेवा में तो क्या है, अलग अलग तरीके के काम आते हैं. कई बार ऐसा होता है कि काम थोड़ा कम आता है, तो सेवा फेडरेशन हमें काम लाके देते हैं, काम में मदद भी करते हैं वो. फेडरेशन की ही बेटी, फेडरेशन के नीचे ही पहले प्रोजेक्ट के तौर पे हमने काम किया 2-2.5 साल. जब कोऑपरेटिव थोड़ी हुई, अपना खुद का थोड़ा बैलेंस हुआ, तब तक फेडरेशन ने ही हमको सपोर्ट किया है. मेरे 23वीं साल लग गई है, तो सेवा फेडरेशन एक हमारा मायका जैसा है कि जैसे कि हम हर रोज़ मैके में जाते हैं. अब कभी हमको कोई दिक्कत नहीं हुई कोई भी प्रकार की, तो जो फेडरेशन है एक हमारा पूरा परिवार जैसा है. Any business needs money to work,
And the story is different for women's collective enterprises, but traditionally they haven't had access to any financial resources. And we work as a women's enterprise support system. This is the gap we fill. We match women's collectives with working capital, and they have in the past used it to set up a shop, to increase their product line, to bring in new ideas, bring in new techniques. पहले हम लोग योजना बनाते थे, लेकिन हमारे पास पूंजी नहीं होने के कारण हमारा योजना बना हुआ ही रह जाता था। जैसे 4 लाख अनुदान दिया गया, उसमें हम सारे बहन के जो शेयर हैं उनसे दोनों मिलाकर, दोनों पूंजी मिलाकर अपना आगे बिजनेस कर रहे हैं। फिर प्लानिंग किए कि अब हम लोग के पास कैपिटल आ गया है, अब हम लोग खुल के करेंगे बिजनेस। अब खुद से आइडियाज आ रहे हैं कि ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, चलो ये खरीदते हैं, ये भी ट्राई करते हैं। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की रेंज आ गई हमारे पास में। पहले हम लोग ना लाख के अंदर ही मतलब घूम रहे थे, लेकिन जब हम लोग को सपोर्टिंग मिला सेवा फेडरेशन से, तो अभी हम लोग मतलब ये पैसा राउंड होते होते हम लोग 12-13 लाख का बिजनेस चल रहा है। हमारे जो लर्निंग्स हैं वो हम तक सीमित नहीं रहे, पर सेवा के फैमिलीज़ जो 19 राज्य में काम कर रहे हैं वहाँ तक जाए, जो दूसरे संस्थाएं काम कर रही हैं, और गवर्नमेंट के जो सखी मंडल बने हैं, तो वो बहनों के साथ भी हम काम करें और उनको हमारे अम्ब्रेला में ले। એકબીજાના ઘરે પણ નહીં જવાનું, બજારો પણ બંધ, બસ રિક્ષા પણ બંધ। સેવા ફેડરેશનમાંથી મોબાઈલ પર કોરોના વિશેની માહિતી આપી, પછી આગેવાન તરીકેની અમને એક માર્ગદર્શિકા આપી। रिलीफ के साथ साथ रिहेबिलिटेशन भी करना है और रिवाइव भी करना है काम को, बिजनेस की। मास्क प्रोडक्शन अगर आबोदाना मंडली कर रही है तो बहनों को इनकम मिल रही है और आबोदाना मंडली को रेवेन्यू मिल रही है। रोज मास्क कलेक्ट करना, रोज हम LSM पहुंचाते थे और हर एक बहन ने महीना का 8 से 9 हज़ार का काम कर रहा था उस कोरोना के टाइम पे। उसी तरह से लोक स्वास्थ्य हेल्थ कोऑपरेटिव अपनी जो है, उन्होंने तुरंत ही सैनिटाइजर प्रोडक्शन का अप्रूवल ले लिया। तृप्ति कोऑपरेटिव कोविड पेशेंट को टिफ़िन सप्लाई कर रही है, तो टिफ़िन का हमने मतलब विकेंद्रीकरण करके प्रोडक्शन करवाया। उनकी बहनों को काम मिलता रहा, एंटरप्राइज को रेवेन्यू मिलता रहा। 71% of the women said that they managed to stay afloat during the pandemic simply because of the support of their cooperative. So federations give us more strength of unity. If we did not have more number and more unitedness, then we would not have in status to say and for the government to listen. So SEVA is federated into state cooperative union, and from there they work with us. So NCY needs strong cooperative organizations like SEVA to meet its objectives and mandates at the national level. SEVA, sometimes I feel that more visible than any other cooperative in India. So SEVA is at UN, SEVA is at ILO, SEVA is at FAO. The ICA organizes regional assemblies and global assemblies, and we also have committees. So again, we've called on SEVA to come and be part of these, to talk not just to an audience in Asia, but also across the globe. And it's helped us in terms of improve our work. So the relationship has been, I think, multifaceted and across all levels. Our 30-year journey with SEVA Cooperative Federation has thrown up many lessons. That women can lead their families out of poverty and towards self-reliance through their own cooperatives. We propose to take many of these lessons to the new Ministry of Cooperation
and we would like to create an enabling environment, one that would simplify the procedures for registration and for smooth functioning. We have to become bigger and stronger and more united. We want to reach every woman in this country and her family and ensure some measure of work and income security and social security.